Okay, so Gopal तो आया है अभी. So we were discussing complex analysis, and the people from mathematics, I gave them a homework that you have to see whether your what should I say? Yeah, but these nth roots of unity. So if I was asking that whether or not the nth roots of unity, the nth roots of unity for a multiplicative group under multiplicative group. Okay. Okay. So this is what I was asking in the very first day, that whether or not this forms a multiplicative group. So this is what the homework was. So Gopal, कैसे करें बताओ start? How to start it? ग्रुप प्रूव करना है सर. हाँ जी. ओके, तो देखो सबसे पहले कल हम पढ़ रहे थे व्हाट वी वर स्टडिंग पॉइंट नंबर 1. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मान लेते हैं कोई हमको वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द nth रूट ऑफ यूनिटी. व्हाट वी वर फाइंडिंग कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर z0 z1 z2 z3 so on and so forth, right? Zn minus 1, where z naught was equal to some alpha raised to power 0, z1 was alpha raised to power 2, alpha raised to power 1, z2 आया था शायद alpha raised to power 2, और zn minus 1 था आई थिंक alpha raised to power n minus 1, where alpha was equals to e की power iota. I think alpha k was right. So alpha was equal to, I think, this thing. I think this was the case, right? Isn't it? So alpha was e raised to power iota 2 pi by n, and all we need to find is whether this group is a multiplicative group or not. Okay. So in order to justify that, first thing, in order to justify a group is closure. So let us not waste our time and start with the closure itself. So what will be the set of these complex number? Let me define this as let's say un. So un is the group of what I'm saying. Un is the group of all the nth roots of unity. Okay, so nth roots of unity I'm writing here: alpha square, alpha cube dash dash alpha raised to power n minus. Okay, here alpha is equals to what? E raised to power iota 2 pi upon n. I don't think there is a problem to it. Problem in this. Okay, so what you are finding is the closure holds. You take any of these numbers. Let's say if I take alpha raised to power, let's say j, and if I take another alpha raised to power k, where j obviously lies between n minus 1 से लेकर 0, and k also lies between any of these number. इनके बीच में कोई number ढूंढ लिया हम लोगों ने. Let's say what will be the multiplication of it? So multiplication of it will be equals to alpha raised to power j plus k. मानते हो? Okay. हाँ या ना? यस सर. ओके, सो याद करो मैंने कल कराया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. उससे थोड़ा सा एग्जांपल से समझ में आएगा तुमको. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कराया था, तो 1 इंटू ओमेगा कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है? ओमेगा. ओमेगा किसको बिलोंग कर रहा है? वापस से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाले ग्रुप को बिलोंग कर रहा है. सो मान लेते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का अगर ग्रुप बनता मल्टीप्लीकेशन में, तो देखो 1 इंटू ओमेगा किया तो ओमेगा या ओमेगा किसको बिलोंग कर रहा है? वापस से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ग्रुप को. तो देखो क्लोजर का मतलब ये होता है. व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर? व्हेन आई से क्लोजर, व्हाट डज इट इंप्लाई? Closure implies if alpha belongs to set S, beta belongs to set S, and if I'm saying that with respect to star, my group is closed, my set is closed. What do I mean? If alpha belongs to set S, beta belongs to set S, and if I'm saying that with respect to star, my with respect to the operation star is said to be closed if alpha star beta also belongs to S. Okay. For example, if I say that real numbers, that addition is closed with respect to real numbers. So what do I mean? I mean that if there is a real number, let's say alpha, let's say there is another real number, let's say beta,
then alpha plus beta also belongs to R, isn't it? So this is what you mean by closure. So this is what you mean by closure. So first thing we've checked is alpha की power j, alpha की power k becomes alpha की power j plus k. ओके, अब दो पॉसिबिलिटीज, या तो j प्लस के क्या हो, या तो j प्लस के n से छोटा हो, या j प्लस के n से बड़ा हो। मानते हो? अगर j प्लस के n से छोटा है देन देर इज नो प्रॉब्लम टू इट। क्या प्रॉब्लम है? अल्फा, तो अल्टीमेटली कुछ ऐसी पावर आ जाएगी अल्फा की पावर r, और r किससे छोटा है? n से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, दिस विल लाई इन द सेम ग्रुप, इजंट इट? ये इसी का कोई एलिमेंट होगा, मानते हो? देखो, Yes. यूएन में यूएन में वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, डैश डैश डैश, अल्फा एन माइनस वन, ये सब क्या है? एन रूट्स ऑफ यूनिटी तो है बेटा। आपने दो दो एलिमेंट्स पिक किए, अल्फा की पावर जे, अल्फा की पावर के। मैं तुम्हें सिंप्लिसिटी के लिए समझा रहा हूँ, मैथ्स वालों को तो मैं एक लाइन में खत्म कर सकता हूँ, पर फिजिक्स वाले बच्चों को नहीं समझ पाएगा, बिकॉज दे आर नॉट वेरी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो मैं इजीली समझा रहा हूँ मैथ्स वालों को। मैं लास्ट में एक सजेशन दूंगा, एंड आई थिंक दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अल्फा की पावर जे इंटू अल्फा की पावर के विल कम आउट एज अल्फा की पावर जे प्लस के। अगर जे प्लस के एन से छोटा है, कोई इश्यूज है क्या इसके अंदर? नहीं इश्यूज है, क्यों? बिकॉज इट विल बी सम मेंबर हियर। अब तुम एन से मत कंफ्यूज हो, अल्फा की पावर एन बनाएगा, सोचो ना। इवेंचुअली अल्फा की Yes, पावर sir. एन, अल्फा की पावर जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि सोचो ना, अल्फा की पावर एन क्या होगा? ई की पावर आयोटा टू पाई अपॉन एन इंटू एन, एन से एन कैंसिल, वन ही आएगा। इवेंचुअली सोचो, अगर एन से कम कोई भी है तो इन्हीं में से कोई एलिमेंट होगा, मानते हो? और अगर जे प्लस के एन से बड़ा है, लेट्स से मैं मान लेता हूं इट इज इक्वल्स टू सम एन प्लस आर, और आर यहाँ पर क्या हुआ? लेस देन एन माइनस वन, समझ पा रहे हो मेरी बात की? ऊपर से जा रही है सबके बच्चों के। देखो, दो पॉसिबिलिटी है। ऐसा समझो, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें कहा कि अल्फा की पावर वन और अल्फा की पावर टू, तो अल्टीमेटली क्या है? अल्फा क्यूब आया। अल्फा क्यूब किसका मेंबर? देखो यहीं पे दिख रहा है ये। ऐसे तुमने मान लो लिया अल्फा की पावर टू, अल्फा की पावर थ्री, क्या है? अल्फा की पावर फाइव, अल्फा की पावर फाइव, यहीं तो आएगा। इवेंचुअली तुम देख लो कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट उठा रहा हूँ इस सेट से, यूएन से, और दूसरा एलिमेंट भी सेट यूएन से उठा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, इवेंचुअली वो इसी का ही मेंबर होगा। कब कब तक होगा? जब तक कि उसके ऊपर जो पावर है वो एन एन माइनस वन से कम हो। चलो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एन माइनस वन से कम। ओके, कोई दिक्कत? अगर एन हो गई पावर, कोई प्रॉब्लम है क्या? जे प्लस की अगर एन के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर एन, अल्फा की पावर एन कितना होता है? वन, अभी भी प्रूव करके होता है। और अल्फा की पावर वन, वन मतलब क्या हो गया? अल्फा की पावर जीरो। इवेंचुअली ये इसी का एलिमेंट हो गया, इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट हो गया। मानते हो? हाँ या ना? देखो ना, वन ये रहा। अगर जे प्लस के एन से अधिक हो गया तो क्या होगा? मान लेते हैं कुछ एन प्लस आर हो गया, ऑब्वियसली आर कुछ तो होगा। तो इवेंट मान लेते हैं कि इसके बीच में होगा कहीं। तो खुद सोचो, जे प्लस के एन प्लस आर लिखोगे तो अल्फा की पावर एन प्लस आर लिख सकता हूँ उसको मैं, अगर मेरे को अल्फा की पावर जे प्लस के लिखना था। अल्टीमेटली क्या है? अल्फा की पावर एन इंटू अल्फा की पावर आर, ये अल्टीमेटली क्या जाएगा? अल्फा की पावर आर, क्योंकि अल्फा की पावर एन तो क्या वन है। अल्फा की पावर आर क्या हुआ? अल्फा की पावर समथिंग फ्रॉम जीरो से लेकर एन माइनस वन, वापस से क्या हुआ? कोई ना कोई एलिमेंट इसी के ही तो हो गई। तो इसी चीज को मैथ्स में हम लोग मॉड्यूलों में लिख लेते हैं। सो जो बच्चे थोड़ा सा मैथ समझते हैं, तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इफ आई राइट इफ आई राइट, लेट्स से कहाँ गया, सॉरी, इफ आई हैव टू राइट अल्फा की पावर जे इंटू अल्फा की पावर के, अल्टीमेटली क्या आएगा? अल्फा की पावर जे प्लस के। और क्योंकि अल्फा की पावर एन वन है, तो कैन आई नॉट राइट इट इन दिस फैशन? इट विल बी इक्वल टू सम अल्फा की पावर आर, वेर आर इज इक्वल टू जे प्लस के मॉड्यूलो एन। ये मैथ्स वालों के लिए, फिजिक्स वालों के लिए नहीं। फिजिक्स वाले थोड़ा नहीं समझ पाएंगे इसको, जिनको मॉड्यूलो ऑपरेशन समझ में आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीक्षा को समझ में आया बेटा? रिमाइंडर टर्म ही तो रह जाएगा, देखो ना। सो रिमाइंडर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जे प्लस के मॉड्यूलो एन करोगे ना? यस और नो? कहाँ गई दीक्षा? आई है क्या आज? अच्छा, दीक्षा आई नहीं। गोपाल को समझ में आया बेटा? Yes, sir. भीमसेन को समझ में आया?
ठीक है, फिजिक्स वाले बच्चे तुम समझने की कोशिश करो। देखो ये ग्रुप बनाता है, ग्रुप के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्लोजर होल्ड कराना है। ठीक है, क्लोजर होल्ड कराने का मतलब क्या होता है, अगर आपने अल्फा, ये देखो ये थे अपने कल याद करो, अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, अल्फा की पावर n-1, यही तो थे एन रूट्स ऑफ यूनिटी। एक ग्रुप, एक सेट बना लिया मैंने, 1 कॉमा अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा n-1। कोई भी चीज, कोई भी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट, कोई भी सेट के लिए कोई ऑपरेशन क्लोज्ड कब होता है। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग एडिशन इज अ क्लोज्ड ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। कब, देखो दो रियल नंबर है, दो को तुमने तीन से ऐड किया, 5 आया, 5 भी एक रियल नंबर है, तो मैं कहूंगा कि जो मेरा एडिशन ऑपरेशन है इट इज क्लोज्ड। ओके, सो अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि जब मैं क्लोजर, क्योंकि ग्रुप बिना उसके चालू नहीं होगा, ग्रुप की फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर होल्ड करना चाहिए। तो मैंने कोई एक एलिमेंट लिया अल्फा की पावर जे, एक एलिमेंट लिया अल्फा की पावर के, मल्टीप्लाई किए दोनों एलिमेंट्स को क्या, अल्फा की पावर जे प्लस के। अगर जे प्लस के n-1 से 0 के बीच में, मतलब ये पावर n-1 से 0 के बीच में, तो कोई ना कोई एलिमेंट यही रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर जे प्लस के n से अधिक है तो होगा क्या, अल्फा की पावर n तो 1 हो जाएगा, मानते हो, और रिमेनिंग जो टर्म है, रिमाइंडर टर्म जो होगा वो अल्फा की पावर में आ जाएगा। ये सर नो, समझ में आई मेरी बात। मैं कह रहा हूं अगर j प्लस के n से अधिक है, n से ज्यादा है, ओके, सो इफ j प्लस के इज ग्रेटर देन n, दैट इंप्लाइज व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू n प्लस r, कुछ तो होगा r। ओके, सो इफ इट इज द केस, तो आप क्या करेंगे, n को, अल्फा की पावर n तो हो जाएगा 1, और अगर मैं कहूं अल्फा की पावर j प्लस क्या आएगा, अल्फा की पावर j प्लस क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर n इंटू अल्फा की पावर r। ये जो रिमाइंडर होता है इसको मैथ्स में हम इस तरीके से लिखते हैं। सो प्रॉब्ली मैथमेटिक्स पीपल विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग, बट प्रॉब्ली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, दिस इज अल्फा की पावर r। अल्फा की पावर r भी किसको बिलोंग कर जाएगा, un को नहीं बिलोंग कर जाएगा, इफ r लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, देखो ना, आर लाइज बिटवीन n-1 से लेकर 0, एंड इफ यू कैन टेक, तुम कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, अगर ये 2n प्लस आर होता तो भी तो उससे ज्यादा होता, हाँ तो कहाँ परेशानी है, इसको लिख दो 2n, इसको लिख दो r, ये हो जाएगा अगेन 1, अगेन ये r रह जाएगा। सो इन एनी केस यू हैव टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, अगर मैं कोई एक एलिमेंट उठा रहा हूँ इस सेट का, और दूसरा कोई एलिमेंट उठा रहा हूँ, इन दोनों का मैं अगर प्रोडक्ट करूंगा तो अल्टीमेटली इसी सेट का एलिमेंट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर इज ट्रू। कोई इश्यूज इसके अंदर, हाँ या ना, नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो। नहीं सर, आ गया समझ में। अल्फा की पावर जे, अल्फा की पावर के, अल्फा की पावर से लेट्स एन करो, चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, और चाहे इसको ऐसे पकड़ के रखो, अल्फा की पावर के, सॉरी अल्फा की पावर के, अल्फा की पावर एन करो। तुम्हें पता है कि इफ आई विल राइट दिस, अल्टीमेटली क्या आएगा, जे प्लस के प्लस एन आएगा, एंड हियर ऑल्सो जे प्लस के प्लस एन ही आएगा। एसोसिएटिविटी होल्ड्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या करते हैं हम ग्रुप में, एसोसिएटिविटी। फर्स्ट इज क्लोजर, सेकंड इज एसोसिएटिविटी। यस और नो, फटाफट से बोलो बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो वन एलिमेंट दिख रहा है यूएन के अंदर, वन एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, यस सर। ठीक है, तो वन एलिमेंट दिख रहा है, तो इट इंप्लाइज व्हाट, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि वन को तुम किसी से मल्टीप्लाई करो अल्टीमेटली तुम्हारा यही आ जाएगा। सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यू टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम द सेट, लेट्स से ग्रुप को ये जी, यू टेक एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, you whether right multiply it or left multiply it, you get back the number itself. So this particular thing is called as identity. So existence of identity हो गया, कोई दिक्कत। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा बेटा, बोलो, existence of, इनवर्स। इनवर्स। तो लेट्स से अल्फा की, हाँ अल्फा की पावर जे जैसे मान लेते हैं, है ना, तो मान लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, जो फिजिक्स वाले बच्चों को थोड़ा सा धीरे धीरे विजुलाइज होगा क्योंकि बहुत समय हो गया तुमको ये पढ़े हुए। तो लेट्स से अल्फा की पावर 1, याद है ना अल्फा क्या है बाबा, अल्फा इज व्हाट, ई की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन, याद है ये चीज, ये तो हमने कल लिखा था। अल्फा की पावर 2, पढ़ो बैठ के घर पे, सारा दिन मस्तियां करोगे तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। अल्फा की पावर n-4, कॉमा अल्फा की पावर n-3, अल्फा की पावर n-2, अल्फा रेज टू पावर n-, आई होप इट इज क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। सो देखो, इफ आई हैव टू सी, अल्फा की पावर 3 दिख रहा है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, सॉरी, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज 1। So what is inverse? Inverse is that element which when multiplied with A gives me the identity, isn't it? So if A is an element of group G, A inverse should also belong to group G such that A when operated on A inverse should give me identity. Yes or no? So this is inverse element. इसको inverse element कहते हैं. Okay.
So for example, if I say alpha की power 2 दिख रहा है, you just see alpha की power n minus 2. अल्फा की पावर 2 के लिए अल्फा की पावर n minus 2 को देखो, तो अल्फा की पावर 2 into अल्फा की पावर n minus 2, what you will get? You will get अल्फा की पावर n, एंड अल्फा की पावर n क्या आ गया? 1 आ गया. सो अल्फा की पावर 2 के लिए इनवर्स क्या हो गया? अल्फा की पावर n minus 2. ऐसे अल्फा की पावर 3 के लिए इनवर्स क्या हो गया? अल्फा की पावर n minus 3. अल्फा की पावर 4 के लिए इनवर्स क्या हो गया? अल्फा की पावर n minus 4, एंड so on and so forth. Are you getting my point? अल्फा की पावर 1 के लिए क्या हो गया? अल्फा की पावर Yes, n sir. minus 1 इज अ सेल्फ नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं है. सो इवेंचुअली आइडेंटिटी इटसेल्फ, सो इवेंचुअली तुम्हें क्या पता चल रहा है? फॉर एवरी अल्फा की सो अल्फा की पावर j बिलोंगिंग टू un, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अल्फा की पावर j, सॉरी n minus j, and alpha की पावर n minus j also belongs to un. So for an arbitrary element alpha की power j in the un, you have an element alpha की power n minus j, so this is your inverse. And inverse belongs to the group. So eventually what I will say, and you can see, you can fairly simply see that alpha की power j plus k you do, or you do alpha की power k plus j, sorry, alpha की power k into alpha की power j. So commutativity also hold. So this forms an abelian multiplicative group. Okay. In fact, you'd see that all the elements are generated by e की power iota 2 pi by n. Okay, so generator of this group is this. Eventually, you can say that this is a cyclic group also. So each of the elements are generated by e की power iota 2 pi by n. Yes or no? भीमसेन को समझ में बेटा? यस सर. ठीक है. So, बच्चों को नहीं भी आया, प्लीज डू अंडरस्टैंड, कभी एग्जाम में आए, बिकॉज देखो होता है क्या है, 5 years 6 years डाउन द लाइन अगर वो लगातार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूछ रहे हैं, लगातार कॉन्टोर इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, तो दे विल डू समथिंग न्यू. So what they would ask in group theory, they would ask this sort of question. Okay, so physics वाले बच्चे अगर नहीं भी थोड़ा समझ में आया हो, तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ यूनिट, सॉरी, with nth roots of unity, they form a multiplicative group with respect to unity. Sorry, multiplicative group, a cyclic multiplicative group, or you can say abelian group here. So here it forms an abelian multiplicative group, and also that you can see that each of these elements can be generated by e की power iota 2 pi by n. So this is called as generator. So this is a if you just go back to your books in if your first year BSc, you will find all these definitions. Try to cope up all, try to learn all those definitions and come back again. So I think this will be it. So this is it. This is some homework that I gave yesterday to the maths people. Now let us move forward, and let us take our discussion a little bit ahead. So yesterday, why I was discussing, let's see, there will be a probably there will be a lecture on Riemann sheets also I will make, but I think that's that I would do on a recorded thing, because that would take a little bit of time, and so I would discuss something called as Riemann sheets with respect to multivaluedness. But overall, we were yesterday discussing the multivaluedness. So if I was discussing z raised to power half, I was discussing z raised to power 1 by 3, and so on and so forth. So what do you think z raised to power p by q would behave like? And understand my point, z raised to power n is analytic. इसको याद करो. You don't need to prove it, because it will take some bit of time, and you just understand z is analytic, z raised to power n is analytic, where n belongs to natural. Okay, so any powers of z, like integer power, sorry, positive integral powers of z is also analytic. I told you on the very first day that z bar is non-analytic. In fact, we found also that z ka mod ka whole square is analytic only at origin, is differentiable only at origin. So why I refrained from using word analytic? Because analytic would require me to say in the origin there should exist some neighborhood where mod z ka whole square should be differentiable. But eventually I found that it is only differentiable at points 0, 0. So any neighborhood of 0, 0 will any neighborhood of 0, in any neighborhood of 0, 0, z mod z ka whole square will not be analytic, because it is only differentiable at a single point, not in the neighborhood. Okay, all these things we have already studied, isn't it? We also studied that e की power z is an entire function.
by saying that e raised to power z is an entire function, I mean that e raised to power z is a differentiable one and is single valued for all those values of z such that mod z is less than infinity. That is, in the finite complex plane, e raised to power z is differentiable as well as single valued, so it is analytic on the finite complex plane. And functions which are analytic on the finite complex plane are called as entire functions. So the domain of holography holomorphy. So domain of holomorphy comes out to be mod z less than infinity. I hope I have defined holomorphic functions. Yes or no? I did. मैंने बताया होगा holomorphic functions ना? Yes or no? कोई बोल भी नहीं रहा है यार. I mean, I told you na कि these are regular functions, holomorphic functions. These are interchangeably used. Okay. So if I say domain of analyticity or if I say domain of holomorphicity, they are one and the same thing. Yes or no? Are you getting my point? अरे words से मत डरो. I'm just making you used to all these words because exam में पता चला किस दिन domain of holomorphy आ गया और तुम छोड़े है question. ऐसा मत कर देना यार. This is something that you are not supposed to do. Yes or no? हाँ या ना तो बोल दो कोई. क्या हो गया? कहाँ चले गए बच्चे सारे के सारे? Yes or no? समझ में आ रही है बात मेरी? बिल्कुल ही ऊपर से जा रही है. सर ये होलोमॉर्फिक नहीं पढ़ा मैंने. अच्छा, होलोमॉर्फिक नहीं ये बताया मैंने शायद तुमको. सर बताया होगा, शायद मैंने उस टाइम ज्वाइन ना किया. चलो मैं आज वापस बोल दूँ. ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बेटा? किसी यहाँ और में तक कोई पढ़ा हो दिक्कत तो नहीं पता ना? नहीं. यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है. No, ठीक है, तो ब्रांच पॉइंट कल हम डिस्कस कर रहे थे. ब्रांच पॉइंट में हम लोगों ने सबसे पहले z रेज़ टू पावर 1/2 को डिस्कस कर ही लिया था. याद करो, z रेज़ टू पावर 1/2 को डिस्कस कर लिया था. हाँ या ना बोलो. इसके बाद हमको आज डिस्कस करना था. यस सर कर लिया. ठीक है, जेड की पावर 1/3 भी कर अब लिया था. हाँ राइट. सो नाउ आई एम सेइंग z की पावर 1/3 भी कर लिया. लेट्स से z की पावर 1/n करेंगे तो हमने क्या देखा था? z की पावर 1/2 जो होता है that has two branches. याद करो, that had two branches. Z raised to power 1/3 की 3 branches थी. याद करो. Similarly, I can say that z raised to power n will have n branches, and z raised to power p over q, and p over q obviously belongs to set of rationals. सर ये जेड पावर एन है कि 1/n? Z की पावर 1/n. Z की पावर 1/n will have n branches, and if p by q belongs to q, obviously हमें पता है कि if p and q are some natural numbers, let's say positive, let's say natural numbers हैं, and if p by q belongs to set of positive rational numbers, then z raised to power p by q will have q branches. इसको याद करो. I don't want to prove it, but somehow just remember it. Because see, हम क्या देख रहे हैं? Z raised to power 1/2, there are 2 branches. Z raised to power 1/3, there will be 3 branches, and so on and so forth. If you go on making defining Z raised to power 1/n, you will get n branches. So in exam or otherwise, if somebody asks you what will be the number of branches for Z raised to power p by q, it will be q branches. There will be q branches to such functions. Okay, yes or no? आगे बढ़े. Yes, babe. Okay. So another thing that I wanted to introduce was, you see, we were doing, what we were doing is, let's say again, let me recapitulate. This was what we were doing. So if I had point r comma theta here, and if I was rotating about, I was circulating about origin. So what I was getting 2 branches when I had this z raised to power 1/2. Now what if I am not here? What if I'm not here? And let's say I'm here. What if I'm not here, but I'm here? Okay, now origin is outside. Okay, and now I have to, so let's say this is
let's say this is 2, 0, and let's say this is 1, 0. Okay. Okay. So let's say if this is the case. So if this is the case, how to go about it? So now you'll find that any point here is r comma theta. Let's say this is your r comma theta. So when you start, let's say you start from here, you go ahead, again come to this point, and when you will come back to this point, again when you come back to this point, so here theta is increasing in the first quadrant. You on the upper half of the circle, you will find that your theta is increasing first and then again decreasing to 0. And on the lower part, it will start from minus theta. So minus theta will keep on increasing till the time it gets back to this point. Yes or no? So again, if I come back to this point, even after one revolution, I will find that I am again on r comma theta only. Always remember, theta is measured from the initial point. So this was the initial point. When I was encircling about a circle, what was happening? The thing that was happening was I was initially at theta. After one complete circle, again I came back to the same point, and that angle, or you can say the argument, turned into theta plus 2 pi. But here, if I am at this point, let's say A, the initial, you can say that the angle that it is making with the initial line is theta. And even if I return back to this point all over again the initial, angle with respect to initial axis remains theta. So now no such multivaluedness will arise. Are you getting my point? Yes or no? Do let me know. So देखो मैंने origin को इस बार I have kept the origin outside my evaluation. So what I have done, I have kept the origin outside my evaluation. Are you getting my point? नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो. भैया एक बार वापस से बता दो. अच्छा ओके. सो देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो मेरी बात समझो. देखो ऐसे करते हैं, इसको वापस ढंग से बनाते हैं. देखो हम कल क्या कर रहे थे. Yesterday what we were doing is we were doing this kind of thing. We were on a point, let's say A, r comma theta. r comma theta. हमेशा याद रखो पोलर कोऑर्डिनेट्स में थीटा ये होता है इनिशियल लाइन से एंगल. सो इनिशियल ये था. आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, I was again on the very same point. That is point A only. But argument got augmented by angle 2 pi. Okay. So if I have to say what will be the image of what will be the image under z raised to power half, I will say r raised to power half e की power iota theta. And similarly, again, if I have to say what will be the image, so here the image will be r raised to power half e raised to power iota theta by 2 into e की power iota pi. E की power iota pi is -1. So you have two different values for the same point. So you have two different branches. Now, what if I place this origin outside the evaluation? Like now I'm saying this is my domain. So this is my circle. Here it is 2, 0. Here it is 1, 0. And here it is 0, 0. So I have kept 0, 0 outside. And now I'm interested in this region. I'm interested in this region, not this region. इस region को भूल जाओ. मैंने origin नहीं contain किया. So I'm considering a region which does not contain origin. So I'm considering a region which does not contain origin. अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं. ये वाला पॉइंट पकड़ो. लेट्स से पॉइंट A. तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले 0, ठीक है. फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एंगल इंप्रूव होता जाएगा. एंड लेट्स से इस पॉइंट का एंगल है थीटा. आफ्टर व्हाइल इट विल ड्रॉप अगेन बैक टू 0. And when it starts from below, this will be not theta, this will be minus theta. So minus theta will keep on increasing, and it will again come back to the point, this point. Are you getting my point? This point. After one complete revolution, again if I start my journey, what will happen? I will again come back to the point A, but my angle would remain the same. That is, argument will remain the same. Now there will be no such multivaluedness. Are you getting my point? There will be no such
multivaluedness. समझ में आ रही है? अब देखो अगर यहाँ थीटा प्लस 2 पाई होता तो काम बनता ना, तब आप कहते हैं कि मेरी 2 ब्रांचेस हैं, फंक्शन वही लेके चलो, fz इज इक्वल टू z रेज़ टू पावर हाफ ही लेके चलो। सो आप एक पर थे यहाँ पे तो r कॉमा थीटा था, आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अगेन आप r कॉमा थीटा पे ही हो, क्योंकि थीटा यहाँ से मेजर होता है इनिशियल लाइन से। तो हम क्या देख रहे हैं, अगेन इफ आई कम बैक टू द पॉइंट ए, माय एंगल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन स्टिल रिमेन्स टू बी थीटा, इट इज नॉट थीटा प्लस 2 पाई। Had it been theta plus 2 pi, then I would have said there are 2 branches. So it was the case when I was keeping the origin inside the circle of evaluation या फिर domain of evaluation. मेरी बात समझ में आई कि ऊपर से चली गई वापस से? नहीं समझ में आई? आ गई भैया। आ गई ना? सो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, मतलब ऐसा हो सकता है कि थियोरेटिकली तुमसे पूछ ले, देन यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यस और नो सबको समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? यस सर। यस सर, समझ में आया भीमसेन को? अब एक चीज समझने की कोशिश करो, कल मैंने इसी पॉइंट को क्या बोला था, जब मैं ओरिजिन के ऊपर था तो इसी पॉइंट को क्या कर रहा था, ब्रांच पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रांच पॉइंट, और अब सर्टेनली आज हम इसी चीज को पढ़ेंगे आगे भी। और एक लेक्चर रीमैन सरफेस का मैं तुम्हें बना के दे दूंगा, आई विल नॉट टीच यू इन दैट लेक्चर, आई विल एक्चुअली रिकॉर्ड दैट लेक्चर बिकॉज दैट इज थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, बट दैट इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डज इट मीन? ठीक है, सो मैं ऐसा लिख देता हूँ इसी चीज को छोटी सी जगह पे यहाँ पे। सो इट रिमेंबर दैट इन द लैटर केस, जो भी हम पढ़ रहे थे, इन द लैटर केस a circulation या a circuit around z equal to 0 does not lead to different values or 2 branches. What does it imply? It implies z is equal to 0 is not a branch point in this case. So in the latter case, z equal to 0 is not a branch point. Understand my point? देखो जिस point के about, if I'm circulating, if I get 2 values or 3 values or different values for the very same point, then I say that this point is a branch point. So for example, here it was a branch point. But here if I'm revolving around this particular point, I come back to the point A, again my r remains r, theta remains theta, so I'm not getting 2 values. I'm getting the same value which I was initially stating. So understand my point, this point is not a branch point in this particular scenario. Otherwise here it is a branch. So okay, समझ में आई मेरी बात? हाँ या ना, जल्दी बोलो बच्चों, क्या कर रहे हो? हाँ जी भैया। ओके, चलो चलो, नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। सो देखो हम लोग वन वेरिएबल कैलकुलस के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं। fx क्या होता है, ln x होता है, ln x x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड होता है, और इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है। ऐसा इसमें मत बना देना प्लीज, फॉर गॉड सेक, पहले दिन ही मैंने समझा दिया, ये r स्क्वायर होता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस फाइंड कि log x क्या है। नाउ लेट अस फाइंड कि log x क्या है। So what is log x here? Log x is simply the solution of this particular equation. So if z is equal to e raised to power w, then w we can write it as ln z, and here it is not this ln, but this is defined, w is equal to some ln z. Yes or no? And थोड़ा ध्यान से देखते हैं, any point in the real in the complex plane can be written as r e raised to power iota theta, where r is the modulus of z. मानते हो भाई? r क्या मैग्नीट्यूड ही तो है, and theta क्या है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट of z. So I can write as well as write it as mod z e raised to power r iota argument of z. Yes or no? Yes sir. Okay, so what you will get, you can simply write that your w, which is ln, is ln mod z e raised to power iota argument of z. And the properties remain the same. Okay, the property of log a into log b, log a plus b remains the same here. So it will come as log mod z plus iota argument of z. Now argument कैसा होता है देखो, for example this is my point in the space, let's say this theta is pi by 4, so argument is pi by 4. Again I can come back to the same point
सो आर्ग्यूमेंट विल बिकम 2 पाई प्लस पाई बाय 4. तो ये भी तो आर्ग्यूमेंट ही हुआ. अगेन आई कैन कम बैक टू द सेम पॉइंट. द आर्ग्यूमेंट विल बी 4 पाई प्लस पाई बाय 4, so on and so forth. So I can write that my argument in general is a multi-valued function. दिख रहा है? For the very same point, I have different arguments. For example, I'm saying this is point which is inclined at pi by 4. Now, Mohit will come up and say, no, I will go around of one circle and I will say the argument is 2 pi plus pi by 4. You cannot stop me from doing that. I will say, okay, I agree. Alpna will come and say, no, I will say it is 4 pi plus pi by 4. So eventually, we all would agree and say that argument of z is a multi-valued function. So how to reduce it to a single valued function? In order to reduce it to a single valued function, mathematicians have said that what you do, you just give me the values in this region. You just give me the value in this region. मतलब ये जो ऊपर वाला सेगमेंट होगा इसमें तुम्हें मुझे वैल्यू देनी है 0 से लेकर पाई के बीच में, और ये नीचे वाला जो रीजन है इसमें तुम्हें मुझे एंगल बताना है माइनस पाई से 0 तक. समझ में आए? 0 तो यहाँ इंक्लूड हो गया, पाई यहाँ इंक्लूड हो गया तुम्हारा, और अब नीचे वाला एंगल्स कैसे कवर करोगे? माइनस पाई टू पाई. समझ रहे हो मेरी बात? माइनस पाई टू पाई मतलब नीचे वाला एंगल तुम दोगे माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में, और ऊपर वाला एंगल तुम बताओगे 0 से लेकर पाई के बीच में. इस पे सारे एंगल्स कवर हो गए. मतलब आपसे क्या कहा गया है? यू रिस्ट्रिक्ट योर आर्ग्यूमेंट टू दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर फैशन. रिस्ट्रिक्ट द आर्ग्यूमेंट इज इन दिस पर्टिकुलर फैशन. दिस रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. सो ये जो थीटा पी मैंने लिखा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. अभी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये होता है. मतलब आपने क्या किया? यू हैव रिस्ट्रिक्टेड योर आर्ग्यूमेंट टू अ सर्टेन पॉइंट. लेट्स से इफ आई एम सेइंग गिव मी द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1, 1. So what you will say, the argument of 1, 1 would be equals to what? Pi by 4. कैसे? 1 को लिखोगे let's say 1, 1 है, तो 1, 1 r क्या होगा इसका? √2. देखो ना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी? √2 नहीं होगी. देखो ऐसे निकाल लो, √2 e की पावर iota pi by 4. This particular 1, 1, sorry. 1, 1 can be written as √2 e की पावर iota pi by 4. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो. ये एंगल pi by 4 होगा कि नहीं होगा? होगा. देखो थोड़ा ध्यान से देखते हैं. 1 को लिखो r cos थीटा, 1 को लिखो r sin थीटा. कोई दिक्कत? डिवाइड कर दो दोनों को. तो tan थीटा किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया. मतलब थीटा किसका बराबर होगा? pi by 4 नहीं हो जाएगा? याद करो 1, 1 मैंने सिखाया था 2 वेरिएबल्स में आप पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हो. r cos थीटा, r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा, यू विल गेट tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू pi by 4. यस और नो? सो अब तुम pi by 4 ही बोलोगे एंगल. मैंने बोल दिया तुम्हें एंगल्स इसी के बीच में ही बोलने हैं, दैट इज माइनस पाई टू पाई. यू आर नॉट सपोज्ड टू गो बियॉन्ड इट. तो अब तुम नहीं कह सकते 2 पाई प्लस पाई by 4 भी होगा. So in general, remember argument of z is a multi-valued function. In order to make it a single valued, we restrict the values of argument of z in this domain. We'll say that just give me an answer in minus pi to pi units. So this is defined as the principal branch here. So this is your principal branch. अभी तक समझ में आया कि ऊपर से चला गया? सर सर इसमें हमने ब्रांच कट क्यों इंट्रोड्यूस किया और प्रिंसिपल वैल्यू 0 to 2 पाई क्यों नहीं ली जैसे पहले केसेस में ले रहे थे? इस पर अपने ब्रांच कट इंट्रोड्यूस कर दिया है इवेंचुअली. मतलब हमने एंगल सेंस में कर दिया है कि वी आर नॉट सपोज्ड टू इनकॉर्पोरेट द एंगल माइनस पाई. माइनस पाई कौन सा एंगल होगा बेटा? ये देखो यहां से घूमो, ये नेगेटिव में एंगल चल रहे हैं तुम्हारे जी. तुम माइनस पाई मतलब नेगेटिव से तुम इस वाली ब्रांच को नहीं ले सकते. नेगेटिव साइड से जब आओगे अप्रोच करोगे, यू कैन नॉट टेक दिस पर्टिकुलर नेगेटिव रियल एक्सिस. When you will come from the positive orientation, you can take this particular point and you have to consider the argument as pi. But when you are coming from negative end, you cannot take this axis. So in this way, we have actually introduced a branch cut. थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो this is your branch cut. ओके सर. और इसमें सर हाँ जी सर बताइए. नहीं बस हम एक नेक्स्ट क्लास से ले लें because I think we are short of time. That is why. जी सर मैं पूछा था इसमें अगर 0 to 2 पाई वाला पहले जो आपने बताया था अगर वो वाला ब्रांच कट